સુરતમાં એએમએનએસ કંપનીમાં થયેલ હિંસા બાદ સમગ્ર વિસ્તાર પોલીસ છાવણીમાં તબદીલ થઈ ગયો છે. સુરતના હજીરા સ્થિત એએમએનએસ કંપનીમાં થયેલી હિંસા બાદ આજે શુક્રવારે વહેલી સવારથી જ સમગ્ર વિસ્તાર પોલીસ છાવણીમાં ફેરવાઈ ગયો છે. એલએનટીના કોન્ટ્રાક્ટ કર્મચારીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલા પથ્થરમારો અને તોડફોડ બાદ અન્ય કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તે માટે પોલીસ દ્વારા સઘન કોમ્બિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓના કાફલા સાથે હજીરાના તમામ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ યુનિટ ઉપર ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે. પરિસ્થિતિને જોતા સુરતમાં યોજાનારી મહત્વની પોલીસ કોન્ફરન્સ પણ રદ કરી દેવામાં આવી છે. ગુરુવારની હિંસાના પડઘા આજે શુક્રવારે પણ જોવા મળ્યા હતા. પોલીસ પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ એએમએનએસ ઘટના બાદ આજે સવારે ફરીથી એલએનટીના અંદાજે 50થી વધુ કોન્ટ્રાક્ટ કર્મચારીઓ એલએનટી યુનિટમાં એકઠા થયા હતા. જો કે પ્લાન્ટ ઉપર પહેલેથી જ સજ્જ તૈનાત પોલીસે તાત્કાલિક એક્શન લઈ આ તમામ કર્મચારીઓને ત્યાંથી હટાવી દીધા હતા અને સ્થિતિ ઉપર કાબુ મેળવી લીધો હતો. શુક્રવારે વહેલી સવારથી જ એલએનટી પ્લાન્ટમાં કોન્ટ્રાક્ટર કર્મચારીઓ દ્વારા ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવી રહ્યો છે. સામે આવેલા વિડીયોમાં જોવા મળ્યું છે કે પ્લાન્ટની અંદર ગેટ નંબર 3 પાસે હજારોની સંખ્યામાં કર્મચારીઓ એકત્રિત થઈ ગયા હતા. પ્લાન્ટના આંતરિક ભાગમાં આટલી મોટી સંખ્યામાં કર્મચારીઓ એકઠા થતા કામગીરી સંપૂર્ણપણે પ્રભાવિત થઈ ગઈ હતી. તો હિંસા પાછળ સોશિયલ મીડિયાનો મોટો હાથ હોવાનું તપાસમાં બહાર આવ્યું છે. હરિયાણાના પાણીપતમાં થયેલા શ્રમિક આંદોલનના વિડીયો વોટ્સએપ અને ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાં વાયરલ કરી અને કર્મચારીઓને ઉશ્કેરવામાં આવ્યા હતા. પોલીસ તપાસમાં ખુલ્યું છે કે આ ગ્રુપ્સમાં ખાસ કરીને પોલીસને ટાર્ગેટ કરવા અને હિંસા ભડકાવવા માટેના મેસેજ ફરતા કરવામાં આવ્યા હતા. આથી હવે પોલીસ સાયબર સેલની મદદથી શંકાસ્પદ કર્મચારીઓના ઇન્સ્ટાગ્રામ, ફેસબુક, વોટ્સએપ ગ્રુપ ઉપર બાજ નજર રાખી રહી છે. આ હિંસક ઘટનામાં પીઆઈ સહિત કેટલાક કોન્સ્ટેબલોને પથ્થરમારા દરમિયાન ઇજાઓ પહોંચી હતી. તો ડીસીપી શેફાલી બરવાલે વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે પોલીસે આ મામલે ગંભીરતા દાખવી ભારતીય ન્યાય સંહિતા અને જાહેર સંપત્તિને નુકસાન અટકાવવાના કાયદા હેઠળ ગુનો નોંધ્યો છે. અત્યાર સુધીમાં 40 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને અન્ય આરોપીઓની શોધ માટે સમગ્ર વિસ્તારમાં પોલીસ પેટ્રોલિંગ અને કોમ્બિંગ ऑपरेशन तेज कर देવામાં આવ્યું છે. देखिए, पानीपत में कुछ दिनों से वहाँ जो आईओसीएल उनकी रिफाइनरी है उसमें वर्कर्स की एलएनटी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की बहुत बड़ी आंदोलन चल रहा था एवं वहाँ स्ट्राइक चल रही थी. उसके हिसाब से कल सुबह से यहाँ के जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं हमारे लेबरर्स के, उसमें वहाँ के जो पानीपत के जो व्हाट्सएप जो भी उनको मैसेजेस मिल रहे थे व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, वो वीडियोस यहाँ वायरल हुए और इसी हिसाब से भरी तादाद में एएमएनएस में लोग इकट्ठा होना शुरू किए. जैसे ही पुलिस को इसकी खबर पड़ी तो हमारे जो पीआई हैं वो घटनास्थल में पहुंचे और उन्हें बहुत प्यार से शांतिपूर्वक लोगों को समझाने की कोशिश की, पर पत्थर मारा शुरू हुआ लोगों के तरफ से एवं जब पुलिस को स्विफ्ट एक्शन लेना पड़ा और हमारे तरफ से 10 राउंड फायरिंग एयर में की गई, 6 हैंड ग्रेनेड का यूज़ किया गया एवं 36 गैस शेल्स हमने फायर किए. इससे हमने डिस्पर्स किया क्राउड में. हमारे जो पीआई हैं उनको भी चोट लगी, थोड़ी माइनर इंजरीज हुई हैं, 1-2 कांस्टेबल्स को भी. एवं इसमें जो आईपीसी जो बीएनएस की जो धारा है उसमें 109 तहत, 1091 तहत, 189(2) तहत एवं वेरियस सेक्शंस एवं प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 तहत हमने एफआईआर ली है, जिसमें 40 लोगों की अभी तक अटकायत हो चुकी है. कॉम्बिंग ऑपरेशंस भी जारी है, हमारी पुलिस पेट्रोलिंग भी जारी है एवं इसमें हमने 4000 के टोले के खिलाफ भी एफआईआर ली है. मैडम, ये फायरिंग किसने किया है और क्यों किया था? जो हवा में फायरिंग जी देखिए, वो 12 बोर की फायरिंग की गई थी एंड एवं जो सिचुएशन है उसको देखकर हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं जो थे फील्ड में उन्होंने की थी. मैम, ये 307 दाखिल करने के पीछे का कारण? देखिए, जैसा सिचुएशन बना उसमें हमारे जो पीआई हैं जैसे वो उतर रहे थे तो जब भी उन पर भी हमला किया गया और एवं उनके हाथ में जो ग्रेनेड है वो भी खींचने की कोशिश की और फिर उनके तरफ फेंका गया. तो डेफिनेटली उसमें जो भी इंटेंट आता है उसके हिसाब से सारे सेक्शंस लगाए गए. मैम, सोशल मीडिया में किस तरीके से अफवाह इन लोगों ने फैलाई, क्या क्या मैसेज दिए गए? देखिए, हम आपसे आपके द्वारा यही अपील सबसे करना चाहते हैं कि पानीपत में जो वीडियोस लिए गए वो वीडियोस को जो ये फेक न्यूज़ की तरह यहाँ के वीडियोस दिखाए जा रहे हैं,
वहाँ के कुछ लेटर्स यहाँ दिखाए जा रहे हैं एवं लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। इसमें साइबर टीम्स बिल्कुल एक्टिव हो चुकी है। हर एक सोशल मीडिया अकाउंट अभी मॉनिटर किया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप में एडमिन्स को बुलाया जा रहा है और जो व्हाट्सएप मैसेजेस जो भड़काऊ किस्म के हैं, जिससे लोगों के फीलिंग्स को अफेक्ट करना एवं गलत न्यूज़, फेक न्यूज़ फैलाने की अगर कोई इंटेंट है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। मैडम, बाकी लोगों को किस तरह ढूंढा जा रहा है और कितने लोग हैं? देखिए, पुलिस पेट्रोलिंग हो रही है एवं जो 40 हमारे पास जिनको हमने अरेस्ट किया है, उनके स्टेटमेंट्स में वो खुद भी बता रहे हैं। सीसीटीवीज़ में हमारी एक टीम बैठ चुकी है, जो लगातार जो सीसीटीवीज़ में जो लोग दिखाई दे रहे हैं, और इनकी भी टीम्स हैं बेसिकली AMNS एंड LNT की, जो उनको आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद कर रहे हैं। ऑल्सो जो भी हमारे लोकल्स हैं, जो वहाँ मौजूद थे, जो एक जिसे कह सकते हैं कि बातमी हमें दे रहे हैं कि सर ये हो सकते हैं और ये हो सकते हैं, इसी हिसाब से पूरा एक प्रोसेस किया जा रहा है।